So now first, before sessions we will first discuss about forms, correct? So वो जो अलग अलग form input है उसको कैसे pass करना है वो अभी discuss करेंगे. So let us create a simple form H3. So form tag, always form tag is mandatory whenever you want to submit information. So we will have different types of inputs. So let us first use one text input. Okay. So when I design forms, I organize them inside div elements. Div elements में देना important क्यों होता है? So that you can add margins. Okay. Whenever you add margin, such as my2, my3, then you can group this together. Okay. Label और input को एक साथ group करके top and bottom में margin डाल सकते हो. That's the benefit. So let's say first name. So we'll create a standard form which will include various types of inputs. The first one will be text. Okay. So name attribute also is important because server में हम लोग को read करना पड़ता है. Okay. To access on the server, we have to provide one name attribute. Make sure there is no space. You can use underscore if you want, but don't put any spaces. Alright. Then I will also link Bootstrap, by the way, so that I don't have to design it. So let me copy the link with Bootstrap. Just 1 minute. Yeah. So I've added But first. have you started anything? Could you give an overview? Actually, I just had something to do, so I had to once just I got I missed out on it. Yeah, we will be first discussing about forms, how you can pass different types of forms, how you can pass values from different types of forms like radio inputs, Okay. checkbox, because you wanted to learn Okay. that, and it is also Yes. important. Yes. Yeah. So for your insurance form, there Yeah. is checkbox and all these radio buttons. Yes. Yeah. Definitely. Yes. So not only text Yeah. input, so we will include various types of form inputs here in this form. Okay. So first name, full name So would maybe. you be recording this? Because again, if when I need to practice, maybe I'll need a bit Yeah. of reference. So that's Yeah, why. yeah, yeah. I am recording this actually. So after this topic is finished, I'll cut this and I'll re-record for the next session. Basically, this Sure. session part. Yeah. Yeah. Otherwise, if we record one Yeah. in full length, like it gets cut. I don't know. So some Okay. problem Sure. occurs. Yeah. Yes. So this will be full name. Then we will say select subjects. Imagine this is an admission form. Okay. Student admission form. So we can say select subjects. So in select subjects, we will have multiple selection like English, Math, Science. They will be able to select multiple subjects they like. So for this, whenever you want to allow multiple selection, always use checkbox. Okay, don't use radio input. Radio input is used for exclusive selection like gender. So gender can either be one of them. Okay, it cannot be both, right? So that's what. Similarly, wherever you need exclusive data, like you want only one should be selectable, then in case you should use radio button. But use checkbox whenever you want multiple selection. Okay, like select subjects. So I should be able to select the subjects I like, such as English, Maths, like that. So in those cases, we will use input type checkbox. So we can say English. Okay. In Bootstrap, whenever you want to style checkbox, you cannot use form control. Okay, the class name is not form control. The class name is form check input. Form check hyphen input. Remember this. Okay. You have to put form check input. So suppose we have English. So I'll group them together in label. So this select subject is not required in label. I can put in p tag, or even if it is in label, no problem. You don't have to be that much formal. But this one, whenever someone clicks English, this checkbox should be triggered. Okay, checkbox को trigger होना चाहिए. So that's why I group them together inside one label tag. You can also use label for input में ID देके ऐसा भी separately रख सकते हो अलग अलग से. So these are my subjects: English, Hindi, Math, Science. Suppose we have 4 subjects. Then we will have radio button for select gender. So basically we are trying to add different types of foreign inputs as much as possible so that we get idea how we can submit this.
Okay, so here also we will create one radio input like this. This was checkbox. Here we will use radio because we want it to be exclusive. Okay, then we will put name attribute here. It is important. In case of radio, if we don't put name attribute, तो क्या होगा? Like name attribute is required for all inputs by the way. ठीक है, but इधर radio में क्या होना पड़ेगा? Name attribute को same होना पड़ेगा. That's the important thing. So name attribute gives something meaningful like gender. So this will also be used in backend to whenever we will read this value. ठीक है. So name attribute is important in all these inputs. I'm coming to that also. Then at last we will use select box and then one text box, text area. Select box में state के लिए use करेंगे हम लोग या फिर city. Okay. So now we will create one select input /select. I'll also send the code so that you get some reference how you can use with multiple form inputs. So select state बोल के हम लोग label डाल सकते हैं. Assam. So then we need one text area. Text area भी हम लोग बना देते हैं. हाँ, in select you have to put bootstrap class. इसका क्या है पता है ना? Form hyphen select. Okay. This is not form control. Okay. So in case of select and this radio and checkbox में form check input और select में form select. Okay, just these two things are different. Then बाकी जितना भी input है सब में form control होगा. Date हो या whatever input. Date input. Yeah, let us get date of birth also. DOB. Input type equals to date. Correct. So input type date हो या password हो, it will be same method. Just name attribute डालना है. This is easy. Text area में भी name attribute ही है. So let us type this also. इसमें मैं my3 बोल के सब में लगा दूंगा class. So that there is some gap actually. हाँ. So here we will create. We could have also used p tag actually. थोड़ा gap आएगा. Then using label. So enter comments or suggestions. Text area /text area. We can say rows equals to 5, 6. You can style this using height also. Okay. Height 150 pixel. ऐसा height से भी दे सकते हो. Then row is not required. But if you don't put any height, make sure to put rows. Otherwise, बस 3 row या 2 row ही आएगा by default, which is not what we want. Okay. So इधर भी class दे सकते हो bootstrap का form control. So with this, I think our form is ready, and इतना ही input है, like select, radio, checkbox, and text area. So these are the most commonly used inputs. बाकी input like date, yeah, they are same process like date हो या email हो, input type number. They have the same process. You just have to add name attribute तो server में मिल जाएगा. But for this checkbox and radio, it's slightly different how you have to work. ठीक है, वो मैं बता रहा हूँ. Now let us run this. Localhost. Just start localhost. Then /sessions. ये मैंने folder बनाया है /sessions. So /sessions /index.php. But index.php is the default file. So just going to sessions will open this. Okay, so this is my admission form. So I'll use container class. So I'll wrap this entire thing in div class container so that I get consistent spacing on the left side and right side. Okay, /div. Then in container I'll put some my4 or my3. Okay, so this is my admission form. Select gender. अच्छा, gender में क्या आ रहा है? Checkbox आ रहा है, right? So we have to make this input type radio. I did not notice this, so it should be input type radio. So in checkbox you can see it's not exclusive. Even if I give same name attribute, right? मैंने same name attribute दिया है. Still it is not exclusive. But as soon as we make it input type radio, then it becomes exclusive. Okay. So make sure you use the right one. Okay, wherever you need this. So I will wrap this inside div element again so that I want it to start in a new line. Because div is a block element, so it will always start in a new line.
or I could have also made this p tag. इसे p tag करने से थोड़ा gap आएगा. That's also better. Okay, so in label I can add class equals to me3. me means margin end. Okay, it's a bootstrap class. Margin start ms, me margin end, like this. थोड़ा gap आएगा. Then we have subjects, subject selection. ठीक है, हिंदी मैथ साइंस इसको भी नया लाइन में जाना चाहिए. So I can put these subjects in p tag. So then automatically the other ones will come in new line. सबके लेवल में हम लोग एक क्लास pe2 लगा सकते हैं. ठीक है. So there will be some gap like this. Then select state. It's a select box. That's fine. So it's actually quite big. We can make it smaller. Correct. So we can make it smaller by adding w-50 with 50%. So it will be only 50% of this page. Otherwise it's too large. And to center this, it's very easy. MX Auto, right? Because form is a block element. So whenever you want to center a block element, you have to use MX Auto. Okay. So it's centered. Form is centered. There is no background color. So you can put if you want. BG secondary. It's fully optional though. So I'm actually omitting this background color. I'll just put a shadow, then some padding. ठीक है, just some shadow and padding. Then this admission form इसको मैं center कर देता हूँ. Class equals to text center. ठीक है. So that's fine. We are not focusing on designing. So now the main thing is to be able to submit. देखो जो भी हम लोग का input type text होगा, input type date, whatever tag जो input से start होता है ना, उसमें name attribute देना ही पड़ता है. So those you will be able to receive in the PHP file. इधर फॉर्म में हम लोग जो भी एक्शन देंगे ना, process.php, so in that file we will be able to receive the data. मेथड में पोस्ट करता हूँ. ठीक है. So full name, DOB, input type, this we already discussed. So even if it is date type, does not matter. This value will be sent to the server. But come to this radio type. Okay. So this radio type में क्या होता है? उसमें भी name attribute देना पड़ेगा. Now make sure those radio inputs which are in one single group. जैसे gender, ये gender group में है ना, male और female. So make sure you put them same name. Okay. Gender में same name देना. अभी next important thing क्या है? इसमें value attribute देना पड़ता है. ठीक है. That's the important thing. You have to put one value attribute. तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि इसका value क्या है. ठीक है. So basically when we submit a form, हमेशा जो name attribute है ना, और ये value attribute एक रहता है, जो हम लोग ने last class में भी एक बार देखा था. We saw this value attribute once. So whenever we submit any form, it's always passed in name value pairs. Okay, हमेशा name and value pairs में pass होता है. हमेशा. So even if you don't put this value, then which value will be passed? This. जो user type करेगा उसका value pass होगा. So whenever we type something here, behind the scene क्या होता है? Behind the scene ये value में store करता है. Okay, browser behind the scene value में value attribute में store करता है. Whenever you type something, whenever you type your name in any input, behind the scene for that input एक value attribute में store करके रखता है. और फॉर्म सबमिट होने से ये नेम के साथ वैल्यू को अटैच करके सबमिट करता है. जैसे फुल नेम इक्वल्स टू ADF ऐसा, मतलब अटैच करके सबमिट कर देता है. तो उस वैल्यू को सर्वर को मिल जाता है. ठीक है. सो दैट वैल्यू इज रिसीव्ड बाय द सर्वर. करेक्ट. सो सिमिलरली इफ यू ऑल्सो पुट वैल्यू लाइक दिस डायरेक्टली, तो बाय डिफॉल्ट इसलिए दिखाई देता है इस फॉर्म इनपुट में. सो यू कैन चेंज दिस ऑफ कोर्स, बट इफ यू पुट सम डायरेक्टली वैल्यू एट्रीब्यूट में जब कुछ डालोगे ना, इट विल कम बाय डिफॉल्ट. ठीक है. सो हियर ऑल्सो इन डेट ऑल्सो यू कैन पुट वैल्यू. ठीक है. अभी डेट में इस फॉर्मेट में डालना पड़ेगा. ईयर फॉर्मेट पहले, फिर मंथ, देन डेट. तो समझ लो मैंने 2016 किया है. 2016-02-12. तो ये डेट मैंने वैल्यू में डाल दिया है. ठीक है. देन दिस विल कम एज डिफॉल्ट. You can see 2016-12, this is coming as default. Although we can change this, but remember always whenever you submit a form, it is passed in name value pairs. एक name रहता है, एक value रहता है. हर एक input का एक name रहता है, एक value रहता है. Any question here? This concept of name value pairs. So if we put value that value to be empty, like empty string, then will it be like in the input value
it will show as like empty, nothing is there. Okay. Yes, exactly. It will be same as not putting. Yeah, it will be same. There will be no difference. Okay. It will be same. So that's why Okay. we ignore, because if you don't want any value, then there is no use of additionally typing this. Okay. Yes. Now the thing is, this input type radio, this does not have any text box where we can type something. That's the problem. Okay, so this does not have any kind of text input where we can type something. We cannot type our gender male like this. Okay, like we cannot type our gender name and then so we can submit. It's not like that, because radio input is just a circle. The one on the right side is different. This is not value. Okay, this is a label. This is just a static text. It has nothing to do with form. It is just a piece of text. ठीक है, जैसे select gender, this is just a piece of text. This is not the value that will be received by the server. So since there is no way to type this kind of value, we have to manually specify the value using the value attribute. Understood? So for radio and checkbox, we have to manually specify using this value attribute. So here you have to say, I want to pass this male, M-A-L-E, this 4-letter word, this should be passed to the server whenever this input is selected. Okay, whenever this radio input is selected, this particular male value should be received by the server. Similarly, if the user selects this one, then name will be gender, which Balaji, is I think your voice is breaking. okay. 1 minute. Thanks for letting me know. Yeah, is it fine now? Yes, Okay. it is. So what I'm telling, so for this normal text inputs, you can type the value, but for this radio input, this you cannot type anything. Okay. So that's why we have to manually specify this value attribute. Still, again, it's breaking, Balaji. It's like same issue just after you asked. That's weird actually. Okay, now it's better. Okay. So okay. So what my point is, I got or not? Basically, you can type here. You can type the value you like. You can type any value you like, but here you cannot put any value you like. You have to put a fixed value like this. Okay. Okay. Because there is no input to type here, so you must specify this Yes. manually. Otherwise, this empty thing will be passed. As you know, by default, its value is empty. So every input has a value, so it will be empty. So you must ensure that whenever this male checkbox is selected, this male actual value should be passed. M-A-L-E. This spelling should be passed. This letter. Okay, this Okay. word should be passed. Similarly here, female should be passed. Okay, so don't focus on this one. Whatever I typed here, male and female on the right side, this is just a piece of text. It has nothing to do with input. So this input tag is important. So this is the main thing which will be considered by the browser. So this is the name attribute will be gender, and the value will be male whenever the user selects this radio input. Whenever user selects this radio input, the name will be gender, then the value will be female. So this will be passed to the server. Okay, so whenever in server $_gender, $_post gender, we will get female. Okay, if the user selects female. So it depends whatever value you put here. Okay, if I put city here, then they will get city. So whatever value you are specifying here, that will be received. Okay, so you have to remember this. That's how this works in case of radio inputs. So in case of checkbox, also it is same. Okay, in case of checkbox also it's same. But the thing is, checkbox हम लोग पहले दो टाइप का देखेंगे. There are two types of checkboxes actually. So right now, like two types of you can do implementation. दो तरह का Balaji, implementation your होगा. voice is lagging again. Okay, then today it's giving a lot of issue actually. Yeah, actually, हाँ. Like, मैं बता although रहा हूँ. when you say something else, it gets normal again. Okay. That's weird. So look, checkbox is implemented in two ways. So एक है multiple ways. Okay, जैसे multiple checkbox है इसमें. So you can see subjects, select subjects. तो English, हिंदी, math, science, ऐसा मतलब multiple subjects select कर सकता है. It's kind of array. Okay, array में जैसे multiple elements हो सकता है. Similarly subjects क्या क्या select किया है user ने, इधर भी multiple होगा.
Okay, so it will be in Okay. the form of array. So checkbox whenever we will submit, it will be in the form of array for this scenario. तो इधर क्या होगा, हम लोग का एक subjects बोल के एक array रहेगा. Okay, so in that array whatever the users have selected, like अगर हिंदी and math select किया तो only हिंदी and maths रहेगा उस array में, ठीक है. या फिर अगर science select किया तो then only science will be there in the array, like that. So basically it can be multiple elements. Okay, but there is also another implementation of checkbox which is using a single checkbox, such as you have seen in accept terms and conditions. Okay, I accept terms and conditions. So in that case वो एक ही checkbox होगा, तो उसको भी हम लोग इधर बना देते हैं, ठीक है. Today we will discuss only this form itself. Baraja, same thing again. Why is it happening so frequently actually? Okay, I think I need to constantly call them. Can you do one thing though? Yeah. Can you open this terminal here? Yes. Yeah, just type ping. Ping. No, just type ping space google.com and then enter. Yeah, now you can keep continue saying, I think. Okay. The Like, internet issue shouldn't happen. okay. Fine. Let us see. So here at last, let me put one thing. I accept terms and conditions. So this should be inside label, so that whenever I click this name, it should submit. Okay. So at last we'll put one button, submit, class btn primary my3. So I accept terms and conditions. At last we have this checkbox. Okay, so you can see this is a multiple checkbox. So this is in the form of array. तो ऊपर वाला जो होगा ये array के form में submit होगा, ठीक है, because इधर मैं multiple select कर सकता हूँ. So for one attribute, say for one name called subjects, we can have multiple subjects. हम लोग का name होगा subject, ठीक है, और उसमें multiple values हो सकता है. But here एक ही value होगा, accepted or not accepted. That's it. Okay, so these are two different kinds of implementations for checkbox. So one is one single checkbox. Okay, so where we don't select multiple options. ठीक है, तो ये इधर बस एक ही होगा, whether it's accepted or not accepted. But here ये होगा कि options कौन कौन सा select किया है. Okay, so you can really see like how they are different. Can you revert to the code of that multiple checkbox and a single checkbox? What you were saying, right? At the point. Right now we have no difference, but yeah, it's a conceptual thing actually. Right now we don't have any difference. Okay. It's the same checkbox I just repeated here. But now we are going to start. Okay. Yes. अभी इसको जैसे लिखना है, it's different. Okay. So what you have to do, you have to give One more question, Baraja, yes. before you go on. Can we put required here as well, like the accept terms and conditions ka part mein that we used to put, right, in password or any form thing? Yes. It to be like okay. Yeah, you can put required, but here we want this to be optional. Yeah. Okay. So we don't want to put required. If I put required, then English को checkbox करना ही पड़ेगा maybe. Like subjects which are mandatory, there you can put required. So we can say English is mandatory. But that accept terms and conditions part. Yes, correct. So this is mandatory. So here we will put required, like that. So it's a Boolean attribute. So either just the presence of the name of the attribute is sufficient. Okay. Yeah. So you don't have to do anything. Just put required. So now the thing is we need to pass an array of subjects. अभी देखो सबका name रहेगा, ठीक है. Everyone will have name like subject. So I'll make this plural actually because subjects बोलने से थोड़ा it will make more sense, ठीक है. But whenever you want to pass multiple values in a checkbox, ठीक है. So see, checkbox में मैं name attribute एक ही जगह में नहीं multiple जगह में use करूँगा, ठीक है. Like this, just like radio input. इधर भी gender pass किया है, right? But this is not an array. As you know, gender can be only one, so it will be either male or female. But in subjects here we can have multiple. Okay. So whenever you are putting name attribute,
सेम नेम एट्रीब्यूट जब डालोगे ना अलग अलग चेकबॉक्स में, ओके, व्हेनेवर यू आर पुटिंग सेम नेम एट्रीब्यूट in different checkboxes, then you have to slightly change the name attribute का syntax. You have to put this square brackets, okay? After the name attribute का जो भी name है ना उसके बाद square brackets देना पड़ेगा, okay? You have to put square brackets after Okay. the name. So this is how you have to write the name. That's just the syntax. It helps the browser to identify that this will be an array. It has to pass in the form of array, okay? So name जो भी name डालोगे ना उसको read करना पड़ेगा $_post, that's fine. But after this just put these two symbols, opening and closing square brackets. Then here सब इसको भी value देना पड़ेगा. Don't think that if we don't put value automatically determine कर लेगा. It is not possible. This is because the one on the right side, it is just a piece of text. It has no connection with the input. Okay, with this input इसका कुछ भी connection नहीं है. We can write anything random here. The only thing that will matter is the value attribute. Value attribute में क्या pass होगा? As you know, every form input has name value pairs. In case of text input, we can change the value by typing. In case of checkbox, in case of radio, we cannot change it. That's why we have to specify the value attribute manually. Okay, manually हमको fixed define करके रखना पड़ता है. तो इसके लिए होगा English. You can also put capital. Okay, the value can have spaces. Okay, वैल्यू में जो भी डाल सकते हो, इंग्लिश ऐसा स्पेसेस भी डाल सकते हो, नो प्रॉब्लम, बिकॉज इट इज़ अ वैल्यू. लेकिन नेम एट्रीब्यूट में यू कैनॉट पुट बिकॉज नेम इज समथिंग लाइक अ वेरिएबल. ओके, नेम इज़ अ वेरिएबल, सो दिस विल बी यूज्ड इन $_post, ठीक है. बट इस वैल्यू में कुछ भी हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, मैसेज हो सकता है. एज यू नो फुल नेम में देखो हम लोग का फुल नेम इज स्ट्रिंग इटसेल्फ, लाइक जॉन डो. एज यू नो देयर इज ऑलरेडी अ स्पेस इन दिस वैल्यू, राइट? सो वैल्यू कैन हैव स्पेसेस, वॉट एवर यू लाइक. ओके, कुछ भी वैल्यू हो सकता है. But name attribute, make sure it follows the proper rules. Example, अगर multiple checkbox में same name use कर रहे हो ना, then make sure you put this array syntax. तो इसमें होगा हिंदी, then math, and last में science. So now see carefully, हर एक checkbox में और हर एक radio input में मुझे value attribute देना पड़ रहा है. Why? Because we cannot type the value manually. ठीक है, तो वी हैव टू फिक्स डिफाइन दिस. ओके, वी हैव टू डिफाइन दिस इन अ फिक्स्ड वे यूजिंग दिस वैल्यू एट्रीब्यूट. ठीक है, एज यू नो एवरी इनपुट टैग इसका वैल्यू एट्रीब्यूट होता है. ऑल्सो सिलेक्ट एंड दैट पार्ट ऑल्सो वी विल सी. एंड दिस मैंने इसको एरे में क्यों चेंज किया? सो दैट आई कैन सेंड मल्टीपल वैल्यूज इन दिस सब्जेक्ट्स. तो सब्जेक्ट बोल के जो नेम है उसमें मैं मल्टीपल वैल्यू पास करना चाहता हूँ, हिंदी, एसएमएस, मैथ, साइंस. ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. डोंट मिस दिस कॉन्सेप्ट. और रेडियो में जो जो एक टाइप का चीज़ है ना, विच आर सेम टाइप ऑफ रेडियो इनपुट एलिमेंट्स, मेक श्योर यू पुट द सेम नेम एट्रीब्यूट. इफ यू डोंट पुट सेम नेम एट्रीब्यूट तो ऑफ कोर्स दोनों को अलग अलग ट्रीट किया जाएगा. देन यू विल बी एबल टू सिलेक्ट बोथ. एंड ऑल्सो व्हेन यू सबमिट द फॉर्म, सर्वर में जेंडर 2 बोल के वो भी सबमिट हो जाएगा. बट व्हेन यू मेक द नेम एट्रीब्यूट सेम, देन ओनली वन विल बी एबल टू सिलेक्ट. ओके, एंड देयर वोंट बी एनी इश्यूज. Similarly, we can also have another set of radio inputs, लेकिन उसमें हम लोग नेम को चेंज करने से हो जाता है. So this checkbox इसमें एरे होना पड़ेगा. हाँ, so if any confusions here, then you can ask. We are moving to select. This is how you will implement whenever you will create a form with checkbox or radios. I will send this code also, code snippet. You can study this form input. Sure. Okay, let us come to select. So bootstrap का class form select है. Now see, select में क्या होगा हम लोग का? Name attribute कहाँ होगा? Name attribute will not be on the option. Okay, name attribute option में नहीं होता है उसमें. In case of select, name attribute हम लोग को इस parent में ही देना पड़ता है. Okay, select. जैसे मैं कौन सा name में पास करना चाहता हूँ? मे बी state. State बोल के जो name होगा उसको $_post state बोल के हम लोग read करेंगे उस फाइल में. ठीक है, so I'll be passing the name attribute as state. So under the name called state, the value selected should be passed. Now अभी option में ये तो just a piece of text है, so this is not automatically passed unless you give value attribute. Your voice is again cracking though. Okay. Actually, weather is also not that good. That's why I think it's cloudy season. Now see, in case of select, it's slightly different.
नेम एट्रीब्यूट होगा सिलेक्ट टैग में. ओके, so whenever you make a select box, whenever you make a drop down element for any form, for any company or for any business, तो नेम एट्रीब्यूट इधर होगा. हाँ, सिलेक्ट टैग में. और वैल्यू एट्रीब्यूट हर एक ऑप्शन में देना पड़ेगा. ओके, इधर जो वैल्यू दोगे वो एक्चुअली पास होगा. Even if I write Delhi here, but if I'm actually passing this value called Assam, this Assam value will be received, not Delhi. Okay, this is just a label which is seen by the user. इधर just display होगा, वो actual value नहीं है. So display part you can change anything. You can make it capital. Here also you can make it capital in value also. Your wish. But it's important that जो value में डालोगे ना वही server में pass होगा. Make sure you remember that. ठीक है, I'm making this capital itself or maybe to remove confusion, like so that you can clearly see that both are different. Let me change the value. मतलब small letters में मैं लिखता हूँ. ठीक है. So any questions here? This is how you write select का. हाँ, इधर एक ही नेम एट्रीब्यूट होगा और ऑप्शन में जितना भी ऑप्शन है ना वैल्यू एट्रीब्यूट इसमें होगा, ऑप्शन में होगा, नॉट इन दिस. सिलेक्ट में नहीं होगा. ऑप्शन में जो भी क्लिक करेगा ना, जैसे वेस्ट बंगाल और सिक्किम, विच एवर डे क्लिक, ओके, तो वो पार्टिकुलर वैल्यू पास किया जाएगा टुगेदर विद दिस नेम. ओके, सो अंडर द स्टेट दिस वेस्ट बंगाल विल बी पास्ड. सो एनी क्वेश्चंस हियर इन दिस सिलेक्ट, हाउ यू इम्प्लीमेंट? कुछ डाउट्स रहने से पूछना. Oh, Okay. Now this text area is very simple. Text area में whenever you want to implement this form submission, तो क्या करना है? Simply name attribute डालना है. How you do in this input type text, correct? So text area is basically this one, this large text area where we can type multiple lines of text. ठीक है? So this is very easy. Here what you have to do, you have to simply type name attribute. That's it. Suppose मैंने नाम दिया comments. So whatever user will type here, तो वो as a value pass किया जाएगा. ठीक है? एज अ वैल्यू वो पास किया जाएगा. वेरी इजी. बट इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर इन केस ऑफ टेक्स्ट एरिया हम लोग का ऐसा वैल्यू एट्रीब्यूट नहीं होता है. ओके, टेक्स्ट एरिया इज द ओनली टैग दैट डज नॉट हैव दिस वैल्यू एट्रीब्यूट. वैल्यू एट्रीब्यूट इसमें काम नहीं करेगा. ओके, व्हिच मीन्स यू कैन नॉट पुट डिफॉल्ट वैल्यू. यस, यू कैन पुट प्लेस होल्डर, टाइप समथिंग. You can put placeholder, but you cannot put value attribute. You can put placeholder, type something. So how will you show a default value? अगर कुछ डिफॉल्ट दिखाना है, जैसे एडिट हम लोग ने कल लास्ट क्लास में सीखा था ना, एडिट करना है. सपोज whenever we want to edit a description, so by default we have to display the description here, right? So since value attribute is not working for this text area input, how will you display the text, default text? जैसे एडिट करने में पहला जो टेक्स्ट था, maybe whenever we edit our Instagram account, पुराना जो बायो था तो वो बाय डिफॉल्ट इधर आना चाहिए ना, पॉपुलेट होना चाहिए फॉर्म में. ओके, सो इट शुड पॉपुलेट द डिफॉल्ट वैल्यूज बाय डिफॉल्ट. सो इन केस ऑफ टेक्स्ट एरिया हम लोग को क्या करना पड़ता है? व्हेनेवर यू वांट टू शो डिफॉल्ट वैल्यू between this opening tag and between this closing tag, okay, you can type here something. Okay, so hello, when I type this, you can see hello comes by default. Now I have to manually remove this. ठीक है? Then I can start typing, or I can also continue to edit from here. Okay, so this is the behavior of text area. So whenever you are using text area input element, उसका वैल्यू को ओपनिंग एंड क्लोजिंग टेक्स्ट एरिया के अंदर देना पड़ता है. उसके लिए वैल्यू एट्रीब्यूट नहीं है. ठीक है, बट इन केस ऑफ इनपुट एलिमेंट जितना भी इनपुट है ना, इनपुट का जो टैग है, इनपुट टैग, सब में वैल्यू एट्रीब्यूट होता है. चेक बॉक्स, रेडियो, ओके, इनपुट टाइप टेक्स्ट. एंड सिलेक्ट में थोड़ा अलग होता है, उसमें नेम एट्रीब्यूट कहाँ होगा? सिलेक्ट टैग में होगा और वैल्यू ऑप्शंस में होगा. बट इन केस ऑफ टेक्स्ट एरिया नेम एट्रीब्यूट इज ऑल्सो देयर. ओके, नेम एट्रीब्यूट इज ऑल्सो देयर, बट द वैल्यू मस्ट, इफ यू वांट टू पुट एनी डिफॉल्ट वैल्यू तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग टेक्स्ट एरिया के अंदर डालना पड़ेगा. सो एनी डिफॉल्ट वैल्यू मस्ट बी हियर. Opening and closing. Okay, so any questions here, then you can ask in text area. It is important to know this difference because as you know value attribute इसमें काम नहीं करेगा. So any default text
it must be here, between opening and closing tags. Okay, then at last हम लोग का submit हो गया. ठीक है, submit button तो ये है, but before this we have one more checkbox, but this checkbox is different. This checkbox is not Rajan, an. your network is again Oh, okay, okay. giving some issue. Thanks for reminding. Any confusion till here, by the way? No. Although one thing, can we write PHP tag and inside that we can echo things like that as well? Inside this, inside the text. Till now we Just haven't need to submitted yet. practice. Yeah. Now see, now this checkbox is different. This is different from this multiple checkbox because here this is representing an array. So basically all these values will be grouped together into one single name. So that must be an array. Since you know array is a collection of values, so we give name like subjects, then you have to put this square bracket syntax. Where was it? Yeah, this one. So this will ensure that whatever values are selected, they will be passed under this array. But whenever you are working with only one single checkbox, so it's not related to multiple checkbox, then simply name attribute is sufficient. Okay, name attribute, and what I mean, wait. So name में हम लोग को कुछ देना पड़ेगा. So suppose we said like terms accepted. Okay, we give something like terms accepted. ठीक है, अभी क्या करेंगे हम लोग, वैल्यू में हम लोग you can put anything, like you can put 1. So if it is accepted तो इसमें 1 रहेगा. So you can put like this. ठीक है, so you can also put other value if you like. Hello ऐसा भी डाल सकते हो. If it is accepted then it will contain hello. If it is not accepted then it should contain null. Okay, it should contain null, but still we will verify this once. But basically normally we put like this, value equals to 1 like that. Okay, so now इधर हम लोग ने बस नेम एट्रीब्यूट दिया और वैल्यू एट्रीब्यूट दिया. एज यू नो इनपुट टाइप चेकबॉक्स उसमें नेम एंड वैल्यू एट्रीब्यूट रहता है. And you can already see that we put one required condition, so this is mandatory. But for now we want to remove this. Okay, we want to test what happens whenever we don't enter and then we submit. तो क्या मिलेगा value? Okay, so we want to log out all the values and we want to test. Now make sure your form is submittable. So make sure this form tag has the action. Okay, process.php, make sure that file exists, and method, if you don't want get method then use post method. Okay, so in case of form submits mostly हम लोग post method ही use करते हैं. So here what I will do, I will create process.php. I will open the PHP tags. ठीक है, and then I want to check, okay, what is there in the post variable. ठीक, now whenever you want to print an array, like how I want to print an array, so basically हम लोग कुछ भी value print करने के लिए या फिर display करने के लिए we use the echo command, right? So we can say hello world. So if I go to process.php / process.php directly, so I'll see hello world because this is also just a PHP file, correct? So echo करने से वो display देगा. Suppose I have an array colors, I can make array like this in PHP, square brackets, red, green, blue, then I can specify the values. This is not an associative array, this is an indexed array. Okay, indexed array. So in case of index array हम लोग का कुछ भी value access करने के लिए क्या use करते हैं, array name then the index number. So every index starts from 0. So 0 means red, 1 means green, 2 means blue. So echo colors करने से क्या आएगा, blue आएगा ना. You can see blue, hello world. Correct. So using echo we are able to display the values. But how will you display an array? Array को कैसे display करेंगे? Echo $colors, will it work? So as you know, this is the name of array variable. This is not the item of an array. We know the second one is the array item because we are specifying the index using square brackets. But this one is an array variable itself, which contains multiple elements. So let us see whether echo works or not. So it's giving an error. So the problem is echo command does not work with arrays. ठीक है, अगर कुछ एरे को तुम लोग को डिबगिंग के लिए, डिबगिंग के लिए कभी डिस्प्ले करना पड़ता है ना, लॉगिंग जिसे कहते हैं हम लोग, फॉर डिबगिंग पर्पस वी हैव टू प्रिंट द वैल्यूज. सो व्हेनेवर यू वांट टू प्रिंट एन एरे you have to use print_r function. Okay, print_r is a function, print array function. So basically this function helps us to print an array on the screen.
ठीक है, यू हैव टू सिंपली प्रोवाइड द एरे नेम, तो ये डिस्प्ले कर देगा. ओके, लुक, array is nicely showing 0 index contains red, 1 index contains green, second index contains blue. ठीक है, so we can also use this for associative arrays. So you can say user, so let's make one associative array. So I brought this down so that it's clear. Associative array is a collection of key value pairs. ठीक है, so this is the key and arrow sign देना पड़ता है. Arrow sign just consists of equal and greater than operator. Don't put space here, huh? Arrow sign then some value. ठीक है, state like this. So this is an associative array. So associative array also has this square bracket syntax, but इसमें name value pair होता है. There is no index number. There is name, there is value. So we can display one of the values of associative array like this. User name. Okay. After the name of the array, we have to specify the key name. In case of index array क्या देना पड़ता है? Index number 0, 1, 2, right? But in case of associative array हम लोग को key का नाम देना पड़ता है, like state, name, like this. So this is how it works technically. So then we get this value, right? But suppose I also want to print this, then associative array में भी काम करेगा. Print underscore r जो function है ना, so this function is very helpful to check array में क्या है, check करने के लिए. अभी तो हम लोग मैन्युअली लिख रहे हैं array को, but whenever डॉलर पोस्ट से आएगा वैल्यू या फिर किसी अलग जगह से array को मिलेगा as a variable, so in that case it will be very useful. So you can see this is also working here. Okay, so we can bring this in a new line also. So we can print echo one br tag जब echo करोगे ना, so it will break into new line. Okay, br कर सकते हो, hr भी echo कर सकते हो. Basically echo command can also output HTML tags. So if you view the view page source, if you view the source, इसमें वो text है and hr tag भी है. Okay, so basically PHP is generating an HTML. But याद रखना that to check, to print values, to print arrays, we have to use print underscore r. 1 minute, I have a call. Oh, hello দাদা, আপুনি পাৰিব ন? আচ্ছা আচ্ছা, মানে ভাইটিক থৈ কৰিব লাগিব. 8টামান হ'ব, 8টাত হ'ব, 8টা 8:30 অলপ আগত. 8:30 নহয় একজেক্টলি, 8:15 মান হ'ব নেকি, 8:10 মান হ'ব হ'ব, ঠিক আছে. Yeah, so I am writing this comment. So this is a comment, okay? This is a multi-line comment. So slash and star, star and slash. It's a multi-line comment. मतलब 2-3 लाइन में comment लिख सकते हो. Whenever you write comments, these are ignored by the compiler. Okay? PHP का compiler इसको ignore कर देगा. Basically PHP को interpreter use करता है. Like it's an interpreted language. Compilers are different from interpreters. Interpreter क्या करता है, मतलब line by line convert करता है. ठीक है? But compiler converts everything in one go. ठीक है, तो अभी इसको हम लोग ने क्यों डिस्कस किया था, मैं इसको कमेंट करता हूँ. बिकॉज इधर से अभी जो हम लोग पास करेंगे ना फॉर्म से, तो हम लोग इजीली चेक करना चाहते हैं कि हम लोग का जो पोस्ट $_ जो हम लोग का सुपर ग्लोबल एसोसिएटिव एरे है, उसमें क्या क्या वैल्यूज आ रहा है. वी कैन इजीली चेक इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग इन 1 by 1 वेरिएबल लाइक जेंडर, एक स्टोर करके एक एको करना. इट विल बी अ लॉट ऑफ एफर्ट. सो नाउ व्हाट वी विल डू, जब फॉर्म सबमिट होगा तो इधर आएगा, राइट? द कंट्रोल विल कम टू दिस फाइल. सो आई विल सिंपली राइट print underscore r $_ ठीक है, आई विल सिंपली राइट दिस बिकॉज आई नो दैट पोस्ट इज एन एसोसिएटिव एरे जस्ट लाइक दिस. और उसमें क्या क्या कंटेन होगा, जो जो हम लोग ने फॉर्म से पास किया, जैसे फुल नेम क्या, तो ऐसा फुल नेम रहेगा. ओके, लाइक दिस. सो इट्स जस्ट एन एसोसिएटिव एरे. इसे कमेंट करता हूँ मैं. So I want to do print underscore r. So these are this below का जो मैंने just comment किया है. So only this will run. So let us go back. और इधर क्या करेंगे, हम लोग फॉर्म को सबमिट करने को ट्राई करेंगे.
जॉन डो, डेट ऑफ बर्थ, तो हम लोग सारा वैल्यू इंस्पेक्ट कर पाएंगे. सो आई सिलेक्ट हिंदी एंड साइंस मेघालय. टेक्स्ट यही रहने दे सकते हैं, हम लोग कुछ एडिट भी कर सकते हैं डॉट डॉट लगा के. आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस, सबमिट. यू कैन सी दिस. देखो इधर जो अभी डिस्प्ले हो रहा है, दिस एवरीथिंग इज प्रेजेंट इनसाइड $_पोस्ट. ओके, तो पोस्ट से हम लोग को क्या मिल गया? अभी फुल नेम मिला, डीओ भी मिला. जेंडर देखो, जेंडर में मेल आया है, फीमेल नहीं आया. ओके, फिर रीड चेक दिस केयरफुली. सो वी गॉट मेल. मतलब जो भी हम लोग ने चेक किया है ना रेडियो में, जो भी हम लोग ने सिलेक्ट किया था वही आया है. अभी सब्जेक्ट्स को देखो, वेरी इंटरेस्टिंग. सब्जेक्ट्स में देखो, इसके बाद फिर से एरे आ रहा है, राइट. सो एरे आ रहा है, देखो. मतलब ये जो सब्जेक्ट्स है ना, दिस इज एन एरे. ओके, तो इफ यू चेक दिस इज अ, ये क्या है हम लोग का? जेंडर. सो दिस इज अ नॉर्मल स्ट्रिंग वैल्यू. लेकिन इसका वैल्यू क्या है? इसका वैल्यू एक एरे है. दैट्स व्हाई इट्स शोइंग एज एन एरे. तो एरे बोल के ऐसा नाम डिस्प्ले होता है. सो दिस इज एन एरे, दिस वन. सो इसमें क्या क्या है? हिंदी एंड साइंस. द फर्स्ट आइटम इज हिंदी, द सेकेंड आइटम इज साइंस. ओके, सो सब्जेक्ट्स इज एन एरे. Why this came as an array? Because we specified this array symbol syntax, जिसको ब्राउजर ने अंडरस्टैंड किया और इन द फॉर्म ऑफ एरे सबमिट कर दिया है. ठीक है, और जो जो सिलेक्ट किया है वो वैल्यू एरे में स्टोर हो गया है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, वेन एवर यू वांट टू पास मल्टीपल वैल्यूज. नाउ स्टेट इज मेघालय. तो ये कहाँ से आ रहा है? दिस इज कमिंग फ्रॉम सिलेक्ट बॉक्स. ओके, दिस वन, सिलेक्ट नेम इक्वल्स टू स्टेट. जो जो वैल्यू है उधर से आ रहा है. ठीक है, दिस वन. तो बेसिकली नेम एट्रीब्यूट स्टेट है दिस वन, जो हम लोग ने इधर लिखा है. और वैल्यू क्या है? जो भी यूजर ने सिलेक्ट किया. मैंने क्या सिलेक्ट किया था? मेघालय. सो ओनली दिस पर्टिकुलर वैल्यू वी आर गेटिंग अंडर स्टेट. अभी कमेंट्स कौन सा है? टेक्स्ट एरिया. टेक्स्ट एरिया में मैंने नेम एट्रीब्यूट दिया कमेंट्स. सो दैट्स व्हाई इन पोस्ट $_पोस्ट ऑल्सो इट इज स्टोरिंग इन एज कमेंट्स. और इधर जो मैंने टाइप किया था वो आ गया है. ठीक है, सो मेक श्योर इन केस ऑफ टेक्स्ट एरिया यू हैव टू स्पेसिफाई द वैल्यू. इफ यू वांट सम डिफॉल्ट वैल्यू, देन ओपनिंग एंड क्लोजिंग टेक्स्ट एरिया के अंदर देना पड़ेगा. हाँ, नॉट इन वैल्यू एट्रीब्यूट, बिकॉज वैल्यू एट्रीब्यूट डज नॉट वर्क इन टेक्स्ट एरिया. टर्म्स एक्सेप्टेड. चेक दिस. टर्म्स एक्सेप्टेड में मुझे क्या मिला? 1. 1 मीन्स ट्रू. ओके, सो आई कैन यूज 1, मतलब ट्रू है, तो आई कैन यूज दिस in storing to in database. So if I store 1 in database, so it will represent true. If I store 0, it will mean false. So I can create this kind of code. Okay, directly मैं 1 या 0 store कर सकता हूँ. 1 मतलब हम लोग का कंपनी में suppose we assume that 1 means accepted and 0 means not accepted. Okay, so that might be the business logic. ठीक है. Now any confusion till here? This thing, by the way. Date of birth वो सब तो normal है. ऋतु बुझी पाइसा? কেনে গৈ পাছ কৰিব লাগে? তো এনে মোষ্টলি ডিফাৰেঞ্চ এইটোৱে, ৰেডিঅ'ত ডিফাৰেঞ্চ হয় চেক বক্স আৰু চিলেক্ট বক্স. এই তিনিটাত মেজৰ ডিফাৰেঞ্চ আছে. তো ৰেডিঅ'ত তোমাৰ নেম এট্ৰিবিউট ছেম হ'ব লাগিব, দেন ভেলু বেলেগ বেলেগ হ'ব লাগিব, আৰু ভেলুটো মেনুৱেলি লিখিব লাগিব. সিমিলাৰলি চেক বক্সত আমি যদি তুমি মাল্টিপল ভেলু ছাবমিট কৰিব বিচাৰিছা, তেতিয়া এৰে চিনটেক্স এটা দিব লাগিব. অপেনিং এণ্ড ক্লোজিং স্কুৱেৰ ব্ৰেকেট, নো স্পেচেছ এলাউড, স্পেচেছ দিব নোৱাৰা. দেন যোনটো ইউজাৰে চিলেক্ট কৰে আণ্ডাৰ দিছ এৰে নেম ষ্ট'ৰ কৰি পেলাই ব্ৰাউজাৰে ছাবমিট কৰি দিব ছাৰ্ভাৰক. ছাৰ্ভাৰ ফাইলত ৰিচিভ হ'ব. তাৰপিছত ষ্টেট মানে ষ্টেট নহয়, চিলেক্ট বক্স. চিলেক্ট বক্সত নেম এট্ৰিবিউট থাকে আমাৰ ইন চিলেক্ট টেগ. তাৰপিছত অপশ্যনত ভেলুটো দিব লাগে. হুইচ এভাৰ চিলেক্ট কৰে ইউজাৰে, ডেট পাৰ্টিকুলাৰ ভেলুটো ছাবমিট কৰি দিয়ে. টেক্সট এৰিয়াত নেম জাষ্ট এজ ইউজুৱেল, বাট ভেলুটো বিটুইন অপেনিং এণ্ড ক্লোজিং টেগ থাকিব লাগে. এট লাষ্ট এইটো আমাৰ চেক বক্স. দিছ ইজ এ ডিফাৰেণ্ট টাইপ অফ চেক বক্স. ইয়াতে কি কৰিছোঁ আমি? উই আৰ পাছিং অনলি ওৱান ভেলু, উই আৰ নট পাছিং মাল্টিপল ভেলুজ. सो दैट्स वाई आई डि नॉट पुट एनी एरे सिंटेक्स, ऑल्दो आई कैन ऑल्सो पुट एरे सिंटेक्स. तो एरे सिंटेक्स देने से क्या होगा? टर्म्स एंड एक्सेप्टेड एक एरे बन जाएगा और उसके अंदर एक ही वैल्यू रहेगा, ये 1 रहेगा. जैसे सब्जेक्ट्स एरे में क्या है? 2 वैल्यू है, एक है हिंदी, एक है साइंस. तो इफ़ आई मेक दिस एरे, तो एक एरे फॉर्म में सबमिट होगा. आई डोंट वांट दिस, आई वांट दिस टू सबमिट इन नॉर्मल फॉर्म. ऐसा नॉर्मली एक्सेसिबल होना चाहिए. तो आई वांट टू चेक वन थिंग, दैट
सिंस हम लोग ने इसको सिलेक्ट करके सबमिट किया इसलिए वैल्यू 1 हम लोग को रिसीव हुआ. What if we don't select? What if we don't check this box and we submit the value? What is the value that we will get? Let us test. So suppose इसको मैंने check नहीं किया है. Okay, I leave it unchecked. Maybe English, maybe I leave this as it is. बाकी सब same है. So I click submit. So you can see I'm not getting this value, right? Submit नहीं किया है. That's why I'm not getting the value at all. Okay. मतलब चेकबॉक्स के केस में whenever you don't check that particular input ना वो सबमिट नहीं होता है. सिमिलरली रेडियो में भी देखो हम लोग का दो ऑप्शन है ना, मेल और फीमेल, तो हम लोग एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं. सो ओनली दैट पर्टिकुलर सिलेक्टेड वन इज सबमिटेड. जैसे जेंडर और वैल्यू नेम, तो वो सबमिट हो जाता है. दो दो सबमिट नहीं होता है. हाँ, सो जब भी हम लोग चेक करते हैं या क्लिक करते हैं, जब भी एक्टिवेट होता है, ओनली देन दैट वैल्यू इज सबमिटेड. तो इधर यू कैन सी वी डोंट हैव एक्सेस टू दिस वैल्यू. टर्म्स एक्सेप्टेड इधर दिखाई नहीं दे रहा है because it was not submitted, because it was not activated. स्विच ऑन नहीं किया हम लोग ने. सिमिलरली इधर भी जो भी हम लोग ने सिलेक्ट करते हैं फीमेल, then only that particular value is submitted. So you can say gender female. So this will require actually practice with various forms. तुम लोग को अलग अलग फॉर्म बना के सबमिट करने को ट्राई करना पड़ेगा. So you have to use different kind of form inputs. क्या क्या हो सकता है, जैसे रेडियो इनपुट, ऐसा मल्टीपल चेकबॉक्स, वैल्यू कैसे पास करना है, ठीक है. फिर दिस आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड. और इनपुट टाइप फाइल को तो याद ही है. इनपुट टाइप फाइल इज जस्ट नॉर्मल, उसमें नेम एट्रीब्यूट देना पड़ता है. इनपुट टाइप फाइल में कुछ भी वैल्यू नहीं देना है. ओके, सो जस्ट यू टू पुट नेम एट्रीब्यूट, देन इट्स एक्सेसिबल इन $_files. ओके, जिसका तुम लोग का 5 एट्रीब्यूट रहता है. नेम, टीएमपी नेम, ओके, ऐसा टाइप, साइज, एरर. देन मूव अपलोडेड फाइल यूज़ करके टेम्पोरेरी नेम से परमानेंट लोकेशन में मूव करना पड़ता है. देन योर फाइल इज अपलोडेड. तो उसमें बस नेम एट्रीब्यूट देना पड़ता है फाइल में. लेकिन बाकी में ना नेम और वैल्यू को ख्याल रखना पड़ेगा. यू हैव टू टेक केयर ऑफ बोथ दिस थिंग्स. सो जहाँ पे वैल्यू एट्रीब्यूट नहीं दिया है, इट मीन्स यूजर कैन टाइप द वैल्यू. सो दैट्स व्हाई वी डिड नॉट पुट वैल्यू एट्रीब्यूट. तो डेट ऑफ बर्थ में भी यूजर सिलेक्ट कर सकता है. सो दैट्स व्हाई आई डिड नॉट गिव वैल्यू एट्रीब्यूट. लेकिन जेंडर में तो कुछ टाइप नहीं कर सकता है. ओके, इसलिए हम लोग को मैनुअली क्या क्या वैल्यू सर्वर में भेजना है, जैसे मेल भेजना है या फीमेल भेजना है, उसको मैनुअली टाइप करना पड़ेगा. हाँ, सिमिलरली सब्जेक्ट भी क्या क्या भेजना है. इफ यू वांट मल्टीपल आइटम्स टू बी सबमिटेड यूजिंग चेकबॉक्स, देन यूज एरे सिंटैक्स. ओके, देन वैल्यू एट्रीब्यूट्स देना है. बिकॉज राइट साइड में जो है वो ऑटोमेटिकली पास नहीं होता. राइट साइड वाला जस्ट अ पीस ऑफ टेक्स्ट, ये डिस्प्ले पर्पस के लिए है, ये पास नहीं होगा. एज यू कैन सी जब हम लोग ने सबमिट किया है तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है, साइंस, हिंदी. दिस हिंदी इज स्मॉल कैपिटल एच, स्मॉल ना, नॉट कैपिटल एच. तो स्मॉल हिंदी ये वाला है वैल्यू में जो पास हम लोग ने लिखा है. कैपिटल वाला तो हम लोग ने यूज़र को दिखाई देने के लिए, मतलब फॉर शोइंग द यूज़र. लेकिन सर्वर में हम लोग मे बी स्मॉल में स्टोर करना चाहते हैं. सो दैट्स व्हाई वी रोट स्मॉल हियर. लाइक सो दिस इज द मेन थिंग, वैल्यू. सिमिलरली ये सिलेक्ट में भी नेम एट्रीब्यूट ये सिलेक्ट बॉक्स में, देन ऑप्शंस वैल्यू इसमें रहेगा, ऑप्शन टैग में रहेगा वैल्यूज. So whichever is selected, that is passed. Then text area maybe name attribute then like this. Now maybe we can try storing in database also, but ठीक है, maybe after submission हम लोग subjects को इधर दिखाना चाहते हैं. हाँ, the subjects is selected are, ऐसा हम लोग दिखाना चाहते हैं. So what we will do, subjects बोल के हम ऐसा रीड करेंगे, $_post subjects. Now as you know, subjects is an array. This subjects is an array. So I cannot echo subjects. Echo command array में काम नहीं करते हैं. Array to string conversion error आता है. हाँ, because echo command works only for strings and numbers. So array cannot be converted to string or number. So that's why you are getting this array. So since subjects is an array, we can print _r. Okay, print _r. This is the function. एक function है, इसको कॉल करना पड़ता है. इसके अंदर उस वेरिएबल को तुम्हें देना है जिसको तुम चेक करना चाहते हो, which you want to print. So you can see after this लास्ट में क्या आ रहा है, हिंदी एंड साइंस. सो दिस इज एन एरे, मतलब इसमें मैं फॉर लूप लगा सकता हूँ. करेक्ट. सो आई कैन राइट व्हाइल लूप ऑल्सो, बट लेट अस यूज फॉर लूप. $i=0, इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन. $i लेस देन, अभी एरे का लेंथ कैसे निकालना है. जैसे हम लोग को पता है i 0 से स्टार्ट होगा, लेकिन एरे का लेंथ निकालने के लिए काउंट फंक्शन है. आई डोंट नो यू रिमेंबर दिस और नॉट. व्हेनेवर यू पुट ए पार्टिकुलर वैल्यू एरे, जब भी कुछ एरे डालोगे ना काउंट फंक्शन के अंदर, तो वो तुम्हारा एरे का लेंथ को देगा. 3, 2 जितना भी आइटम्स है. इफ एरे हैज़ 1 आइटम तो लेंथ होगा 1,
if it has 10 items तो length होगा 10 then dollar I plus plus तो 1 by 1 array को item index को increase करेंगे. I can now use echo command because I will now display a string. So subjects के अंदर dollar I तो फर्स्ट लूप में क्या मिलेगा उसको डॉलर आई क्या रहेगा 0. ओके तो सब्जेक्ट 0 हम लोग को मिल जाएगा like that. So we can write echo h3 the subjects are slash h3. So I'm writing HTML code inside PHP, that's why I'm using echo command. But if I want to write HTML outside PHP, I can finish the PHP tag, then I can reopen the PHP tag from whenever I want. So in this way I can write HTML tags between PHP. Okay, if you want to display variable, then you can use the shorthand syntax like this dollar something. You can also do like that. The subjects are Hindi and science. So suppose इसको हम लोग को unordered list में दिखाना है, correct? Alright. So li and उस tag में दिखाना है. So what we can do, we can open the list text. So here also you can do echo ul unordered list, or maybe इधर closing कर देंगे. We are now writing page like HTML code in PHP itself. Okay. Then similarly li, इधर भी हम लोग को li देना है dot slash li. So we are concatenating the string. हम लोग join कर रहे हैं string को. ठीक है. We are joining this string. ये string और ये string हम लोग join कर रहे हैं. So you got Hindi science. The subjects are Hindi science. So from where it is coming? It is coming from this dollar underscore post. So उधर से हम लोग ने extract किया है. Okay, we have extracted the information and then we displayed in a loop down there. We can also store in database. Okay. So there are various other tasks. Bharat, what is li? Oh, it's a tag, list tag. Unordered The list. list item, is it? Yes, list item. Like OL, LI. In the beginning we Okay. learned, right? OL is like it'll come numbers like that. You can add type attribute. Okay. If I add I, then it'll put in Roman numerals like this, I, double I, like that. Yeah. Yeah. Then in UL you have type square. Then it'll give you square kind of bullet list. So these are some basics of, you can try out the attribute. But the main thing is that you understand how the information is being submitted from different types of forms. This is what we actually discussed, like how to pass multiple values under one array kind of value, how to pass value from select box, text box, then this. Okay. So then this is the date of birth. Okay. So that was the main point of discussion. This video will be available. I will make it available so that you can revise, and this file also I am sending it. Sure. Yeah. So that's it for today. On Friday, I think we'll take the next session. Can you revert to the code once? Because Yeah. when you were previously think that print underscore r. Okay. This So is knowing the entire thing, like it was what is the data type? It's an array or it's a text, and specifying that. no. It just tells array. It does not tell array string or number. It just shows array if it is an array. It only declares the array type. Like it only shows you if it is an array. Otherwise, it does not tell the data type Your of. voice is breaking, Bharat. Okay. So what I'm telling, it does not tell the data types. Your voice was Okay, okay. मतलब it does not tell the data types. It just tells you if it is an array, then it will display in this syntax. Array. So between this parentheses, it will Okay. display the values like this. अगर array है तो. Otherwise, it will just display the values directly, string or number. But if Okay. the value is an array, so ये in between this parentheses, it will wrap in this array kind of description. yes. Very useful to debug this kind But of it is dollar you post. removed that in the lower section, right? Which one? Like it's just showing in the in the display part, the not here, This one. the browser. Browser. Yeah, here if you can see the subjects are in the bullet points you have written Hindi and science, right? Oh yeah. Yeah, but in the previous print underscore r array it specifies array index and then the Hindi. Oh yeah. If you use print underscore r, then it will still show. So basically, I did custom processing. Now see, as you know, subjects is an array. I Okay. explained this.
So I can display the subjects, I can check the subjects using print underscore r function. So then it will display the values like this one. Yes. So I can put on br, wait. So this one, this lower output. Yeah. So this is an array. So if I want to know what is there in this array, so I have to debug like this by printing. Okay. Only then after I'm sure what is there in this array and whether it's an associative array or whether it's numeric array. So this is the only way to know. So you have to print out the array. Okay. After that you can do your own processing. You can run your own for loops. You can use the array wherever you want. You can create list tags like that. So this does not involve. So for this itself actually. So that's it. Printer is just for printing the arrays. Huh? So once you are sure that this contains an array, then you can use this in loop below. Then do your own processing, whatever you like, whether sending to the database, whatever you want to do. But the important thing is itself that you should know how to pass from this form and then how you can receive the values like this. So this itself. So I'll be sending this file and next class directly we'll take on Friday. So we'll discuss on sessions and cookies. So but I think today's session was very important because this form is very fundamental thing and now you know how you can use this other types of input also. Yes. So make sure you implement in your this insurance app or something you did, right? Like where you allowed them to select some. Yeah. Yeah. I'm thinking of implementing this. Yes. So try this out and come up with the logic like how you will store this in database. So you may get stuck here, so you can. Yeah. Because as you can see, it's multiple values. So how will you store multiple values in database? So that can be a question. Yes. Like English, Hindi, maths is in the form of array. Okay. But database cannot store array. Okay. Database can store only one single value in a column. Like you can have string, number, you can have boolean, you can have date, like that one scalar value, not an array. Okay. So you cannot store an array in database. So basically you have to convert this to CSV. Okay. You can store multiple numbers, right? No, basically it's like Excel column. In Excel sheet, in one cell, you can only store one single value in Excel cell. Like you can store some name, number, Yes. like that. You cannot store an array. Although if you store array, it will be in the form of string. It will be like a string where you type the characters, right? Like opening bracket, closing bracket, and all this stuff. But actual that data structure in the form of array you cannot store. So the best method that we actually use is we convert this to CSV. Basically we may convert this to comma separated values. ठीक है? Comma separated values में store करते हैं. Let me check whether this example is there or not. This example is not there actually. One minute. Might be here, wait. Yes, you can see this USP. Okay. Unique selling point. This one. In USP, you can see I am storing the values separated by commas. कॉमा कॉमा देके मैंने सेपरेट किया है. ठीक है. सो इन दिस प्लेस वी विल स्टोर लाइक दिस. सपोज टैग्स में हम लोग क्या क्या स्टोर करेंगे. मे बी सपोज समझ लो टैग्स इंस्टेड ऑफ टैग्स इट इज सब्जेक्ट्स. इमेजिन दिस इज सब्जेक्ट्स. ऐसा स्टोर करेंगे इंग्लिश, मैथ्स,
साइंस लाइक दिस. डेटाबेस में ऐसा स्टोर होता है. हाँ, इट इज स्टोर्ड इन कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज. सो बेसिकली दिस एरे इज कन्वर्टेड टू कॉमा सेपरेटेड वैल्यू. तो ये जो एरे है ना, इट इज कन्वर्टेड टू CSV. ऐसा फिर इसमें डेटाबेस में स्टोर होता है. एंड व्हेन वी रीड फ्रॉम द डेटाबेस, डेटाबेस से जब रीड करते हैं ना, इट इज कन्वर्टेड बैक टू एरे. ओके, फॉर दिस वी हैव वेरी नाइस फंक्शंस, टू नाइस फंक्शंस. ओके, एज यू नो, हम लोग इसको एको नहीं कर सकते, राइट, सब्जेक्ट्स को, बिकॉज सब्जेक्ट्स इज एन एरे. एंड एको कमांड डज नॉट वर्क विद एरेस, सो इट विल गिव यू this kind of warning, array to string conversion. So we have to convert this to comma separated value, right? So the function is called implode. Okay, it's called implode. So here you have to pass two arguments. इसको भी मैं दे देता हूँ. Implode function में हम लोग को दो argument देना पड़ता है. First argument is the character you want to use for separating the items. So which character would you like to use to separate the items? You have to specify in this string. ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्ट्रिंग के अंदर स्पेसिफाई करना पड़ता है जो भी कैरेक्टर से तुम सेपरेट करना चाहते हो. सपोज समझ लो स्लैश, आई वांट टू सेपरेट ईच आइटम बाय स्लैश. देन सेकेंड आर्ग्यूमेंट में हम लोग को एरे देना पड़ता है. इट वर्क्स ओनली फॉर न्यूमेरिक एरेस, हाँ, इंडेक्स्ड एरेस, नॉट फॉर एसोसिएटिव एरेस. नाउ सी एको कमांड चलेगा कि नहीं, लेट अस सी. देखो क्या मिल रहा है, हिंदी स्लैश साइंस मिल रहा है मुझे. यू आर गेटिंग दिस. सो इंस्टेड ऑफ स्लैश आई हैव टू पुट कॉमा. तो क्या मिल गया मुझे, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू मिल गया, हिंदी कॉमा साइंस. सो दिस वैल्यू आई विल बी स्टोरिंग इन डेटाबेस. ओके, दिस वैल्यू इसको मैं इधर भी स्टोर कर सकता हूँ. सब्जेक्ट लिस्ट में भी आई गिव सम अदर वेरिएबल नेम, देन आई कैन एको द सब्जेक्ट लिस्ट. बिकॉज सब्जेक्ट लिस्ट अभी क्या हो गया, एक हम लोग का स्ट्रिंग हो गया. सपोज वी सिलेक्ट मोर सब्जेक्ट्स लाइक मैथ्स एंड इंग्लिश, वी सिलेक्ट ऑल सब्जेक्ट्स. देन देखो मुझे क्या वैल्यू मिल रहा है, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस. सो ईच ऑफ देम आर सेपरेटेड बाय कॉमास. Okay, so using implode function we can specify whichever symbol से separate करना है. Okay, the symbol can also be multiple. Suppose double pipe, double vertical line, उससे separate होना है. Then every value will be separated by double vertical lines. Suppose सबको underscore से separate होना है. Then every value in the array will become a string और उसको मतलब join कर देगा using these values. Okay. Okay. Can you share this section on WhatsApp? हाँ, अभी देखो डेटाबेस से ऐसा वैल्यू आएगा. द वैल्यू विल बी गेटिंग फ्रॉम डेटाबेस से समथिंग लाइक दिस. सो हाउ विल यू कन्वर्ट दिस बैक टू द एरे? फॉर दिस ऑल्सो वी हैव वन फंक्शन. इमेजिन दिस इज द डेटा फ्रॉम डेटाबेस. ओके, और वी कैन से सब्जेक्ट फ्रॉम डेटाबेस. So this is a variable called subject from database जो हम लोग मे बी fetch कर रहे हैं. हाँ, select star from, then maybe we are using dollar row. Okay, now we want to convert this to array again. Okay, because हम लोग को subjects maybe ये subjects में हम लोग को दिखाना है. हाँ, okay, so ये subjects को हम लोग को दिखाना है, ऐसा लिस्ट में दिखाना है. ठीक है, मे बी डेटाबेस से हम लोग को क्या क्या मिल रहा है मैं बता रहा हूँ. मे बी वी आर गेटिंग फिजिक्स, PHYSSES. Maybe these are the three science subjects that we are getting from database. Okay, now we want to convert this to array. Array में क्यों convert करना चाहते हैं? Because I want to use for loop. So you cannot use for loop on a string. So we can only process arrays etc. in loops. Correct. So that's why it is important to convert this to arrays. So उसके लिए हम लोग का explode function है. हाँ, explode. implode का उल्टा है explode. explode में तुम लोग को बताना है कि कौन सा सिंबल से सबको मतलब एक एक आइटम में स्प्लिट करना है. हाँ, स्प्लिट. So the symbol is this one, comma symbol. So this symbol should be used to split the items. Then the string you have to specify. This time you have to specify string, not array. हाँ, in case of implode क्या होता है, उसमें जो जिससे चिपकना है मतलब with which it has to stick the values उसको देना है symbol को, then array को देना है. But in this case you have to specify the symbol with which they have to be separated and then the name of the string. string directly भी लिख सकते हो ऐसा, इधर भी डायरेक्टली स्पेसिफाई कर सकते हो और वेरिएबल में भी दे सकते हो. डॉलर सब्जेक्ट फ्रॉम डेटाबेस लाइक दिस. नाउ आई कैन स्टोर दिस इन एन एरे कॉल्ड न्यू सब्जेक्ट्स.
अभी new subjects क्या है? This is an array now, huh? So I cannot use echo now because this is now array. Error आएगा. Okay, I can only use printer. I don't know if you understood this or not, but you can use this way to convert back and forth. Now you can see physics, chemistry, maths. This is an array. So if I use new subjects in this for loop, तो हम लोग को new subjects में ये output मिल जाएगा. The subjects are physics, chemistry, biology. ठीक है? So basically इधर string से हम लोग दिखा रहे हैं. The new subjects are okay. So explode function gives you an array. इस function को जब call करेंगे ना हम लोग को दो argument देना पड़ता है. First argument is the symbol with which we want to separate. अगर इसमें ऐसा पाइप सिंबल से सेपरेटेड है तो हम लोग पाइप सिंबल स्पेसिफाई करेंगे. देन ईच ऑफ देम विल बी सेपरेटेड बाय दिस. ओके, लाइक दैट. तो डेटाबेस में हम लोग एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग स्टोर करते हैं लाइक दिस. ओके, सो व्हाट वी डू बिफोर स्टोरिंग टू डेटाबेस वी कन्वर्ट दिस यूजिंग इम्प्लोड फंक्शन. ओके, वी सीरियलाइज. इसको सीरियलाइज करना भी बोलते हैं, बेसिकली स्टोरिंग कन्वर्टिंग टू स्ट्रिंग. देन व्हेन वी कन्वर्ट बैक, व्हेन वी यूज इन द एप्लीकेशन में यूज़ करने से फिर से एरे में चेंज करना पड़ता है यूजिंग एक्सप्लोड फंक्शन, सो दैट वी कैन यूज इन फॉर लूप एक्सेट्रा. ठीक है? सो एनी कंफ्यूजन देन यू कैन आस्क, अदरवाइज दिस क्लास इज डन. ओके, Can you just add comments in there? So whenever you share the file, Okay, you can recall easily. okay, I will add your comments and I will send it when I send. In just 5 minutes I'll send it. So Okay. yeah, I'll comment it. Sure. So next class will be on Friday where we will study sessions and we will create one login system. We will build a login system which will help you to create profile pages. Okay? So that when user logs in one time, then he can navigate to various pages और उसका जो क्या बोलता है उसका session preserve होगा. Example, when you are logged in Facebook and when you navigate to other pages, they still know that you are this particular user, you are this particular from this particular place. Okay, your user ID is this particular, like that. So basically the value is preserved across multiple different pages. So this is possible using sessions. Also with cookies possible, but sessions are most they are also used commonly actually. So we will first take a look at sessions. So cookies are basically a little bit long term thing. So, but for sessions also it's Sure. fine. Like yeah, you can make different kinds of apps using sessions itself. So till then you practice these Okay. forms and like try to store in database by serializing using Yes. implode and explode function. And then. Alright then, I'll send these files in 5 minutes Sure. by commenting.